Assalamu alaikum, everyone. Hello. We are back with our second episode of Baithak. Let's talk with three Khans. Today we have a special guest. We have Talaal in the house with us. Talal, go Hello, ahead and Assalamualaikum Walaikum everybody. salam. Looking forward to this. Walaikum Be salam. part of the three Khans and being a special guest. I'm looking forward to this. Bring some spice to the discussion. Oh, you sure will. I'm sure about that. All right, guys. So today is October 21st, and we are doing this podcast right before Pakistan Afghanistan game, and we have a lot to talk about. Sorry, October 22nd. My bad. Weekend is always a blur, so you never know. You can't remember. All right. So again, I have Ahsen and Umair with me. Um, all right, guys. So let's get started. Let's dive right into it. So unfortunately, we had another horrible game, Pakistan Australia, and we lost. I think we should have been gotten used to it by now, right? Unfortunately. So why don't we all get started? Essen, you go ahead first, and we'll carry forward from there. Sure, yeah. Assalamu alaikum, everyone. First of all, yeah, obviously disappointment. Prediction गलत हो गई मेरी, उमर भाई की, तुम्हारी. I'm like, you were all thinking कि यार कि we're gonna win this match. But okay, happens. We have a lot to see in the stats. What exactly went wrong? Definitely हम उसमें deep जाते हैं and we can talk about it. But yeah, disappointment. To be honest, I was thinking कि हम जीत जाएंगे. And there was a point जब match इतना deep down चला गया था कि there was a hope. Like it was in fact became a kind of like 2020 game कि आपको 10 ओवर में around, right? So 100 run चाहिए थे. 100 से भी कम in fact. So it was achievable. We had wickets in hand, but unfortunately we couldn't able to do it. So yeah, fall through the cracks and everything went down. So yeah, yeah, that's what I had to say. Yeah, sir. Maybe Umair can add more. So मेरी तरफ से I would say three things. First of all, bowling शुरू में बहुत horrendous थी, like बिल्कुल garbage. आपने wide spray कर रहे हो आप, Harris's first over went for 24 runs, like unacceptable. So it was just way off the mark. But they pulled it back. Shaheen ka, he got a fiver at the end. That's the first thing, that the bowling is completely off the mark right now. दूसरी चीज है हमारी opening, that looked really promising. I think they scored 100 plus, right? Partnership हो गई थी, and we were on the right track. So that's very, very positive. और तीसरी चीज है कि बाबर की form, I think he's still in good nick, लेकिन वो soft dismissals में out हो जा रहा है. Like the pull he had towards mid wicket and he just got out, I think twice. Netherlands के साथ भी I think ऐसे out होता हूँ. So I don't know what's going on with him. But big match he's not able to produce. So those are my three big takeaways for this. For Babar, I would add that कि अभी भी जितने भी games हुए हैं, none of the bowler was able to out him. Like bowlers का out नहीं कर रहा, वो खुद ही ऐसे shots खेलती. He's just giving like those catches. कोई ball में ऐसी class चीज नहीं थी कि आपकी ball ऐसी आ रही है कि भाई you cannot play. It was just like he's try to make a nick and वो जाके सीधा fielder के पास जा रही है. Even Getting my point? yeah, I agree. Just Siraj ki thi, right? He tried to play it late and he missed it. Yes, exactly. So I completely agree with you. Okay, ये सारे soft dismissals हैं. For me, all 4 dismissals were his own doing. ये नहीं कोई special ball आई and yeah, कि Yorker आई, ऐसी Yorker आई कि भाई unplayable Yorker थी and you couldn't able to play it, you bowled. So so yeah, that's what we Talal. think. Yeah, no, I mean, same thing. You guys, I mean, hit right on the nail with these few points. But I agree. There, for me, definitely top 3 things are the catch drop, Sam Amir. Once you drop that catch, then it just felt like here we go again. So we can't have these mishaps, especially if you're playing a top quality side like Australia. And as soon as he dropped him, and then Warner went for 163, and with about 14 fours and 9 sixes. And secondly, you can't expect your premium bowlers like Haris Rauf to go for 83 some odd runs in 8 overs only. With economy was like 8 Over or 10. 10 runs and over. Yeah. So
agar pura overall dekhe, it was pretty poor experience, just the experience overall from Pakistani side playing against the top quality and giving this quality of effort. It's not gonna last. So, and then Babar Azam, yeah, again, Hamisha ki tarah, not going for, big runs against top quality side, getting out like you guys said. So yeah, if you want to be a call king and want to keep up with the big names and the top quality side, then you got to deliver on, game by game basis, especially against a team like Australia. So yeah, pretty pathetic on from all angles. So, I'm not gonna go that harsh on Pakistani team, to be very honest. I agree that there were issues, but again, when even before the World Cup started, हमें पता था कि वहाँ की pitches ऐसी हैं कि जो आपके fast bowlers हैं उनको पढ़ने वाली है. जैसे वुड्स के साथ भी यही है, स्टार्क को भी पड़ी है. तो हारिस रऊफ का गिवन है कि उसको पढ़नी है. उसके बावजूद भी पाकिस्तानी bowlers हैं जो स्कोर 450 तक टच करने वाला था एज प्रेडिक्टेड, Yeah. उन्होंने उसको कंटेन करके 360 370 तक ले आए. यस, वी आर स्ट्रगलिंग विदाउट अ गुड स्पिनर. उसामा मीर को भी 9 के रन रेट से पड़ा है स्कोर. हारिस रऊफ को भी 10 के अराउंड पड़ा है, आई थिंक अ लिटिल ओवर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और इसी तरह इफ्तिखार ने अच्छी की, नवाज ने अच्छी की, लेकिन बाबर को चाहिए था कि ही शुड हैव यूटिलाइज्ड देम मोर सिंस दे वर डूइंग बेटर. इसी तरह आपके जो शाहीन की 5 विकेट हो गए, तो चलें शुक्र है कि देयर वाज समथिंग गुड फ्रॉम दैट बॉलिंग लाइनअप, ठीक है ना. दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि इवन दो हमारे ओपनर से मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक ने शुरू में कहीं एक आध छक्का मारा था, लेकिन हमारे ओपनर्स ने कोई सिक्स नहीं मारा. बट व्हेन दे कंपेयर्ड द स्कोर, द पॉइंट वेयर ऑस्ट्रेलिया वाज 175 विदाउट एनी विकेट, Pakistan was at 169 with 2 wickets. So even though उन्होंने कोई छक्के नहीं मारे, कोई उन्होंने फ्लैम्बोयंट गेम नहीं खेला, लेकिन they kept the score ticking. करते रहे करते रहे करते रहे. इवन के 2 विकेट गिरने के बाद भी they were on it. They were consistently scoring. मसला ये आता है कि जब मिडिल ऑर्डर के अंदर जब बाबर की विकेट गिरती है, तो उसके बाद अचानक से there is a collapse. So आप अपने कैप्टन से एक तरह का वो एम्बेलिकल कोड जुड़ा हुआ है मिडिल ऑर्डर का, कि जब तक वो होगा तो हम होंगे, हम टेक केयर करेंगे. वो नहीं होगा तो नो वन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन. सो ये अगेन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी, इनएक्सपीरियंस है, तो उसकी निशानी है कि इनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, वो नहीं अपने आप को संभाल पा रहे हैं वहां पे. और इस दफा तो दिल दिल पाकिस्तान भी बजा है, इस दफा तो लोकल क्राउड ने भी सपोर्ट किया है, इस दफा तो मतलब बाबर के नाम के नारे भी लगे हैं. सो आई थिंक होपफुली कोच साहब को या जो डायरेक्टर साहब हैं उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ. सबने पूरा पूरा सपोर्ट किया है. लेकिन अगेन, not to forget and not to take the credit away from the Pakistani team, they did score over 300. Even with all those issues, they didn't manage to score that. So I think कि कहीं पे मिडिल ऑर्डर का जो है वो क्लिक होना बाकी रह गया था. बॉलिंग के अंदर भी उन्होंने एंड में आके संभाल लिया, लेकिन बीच में आई थिंक कैप्टन को और अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे. बाबर इज एन अमेजिंग बैट्समैन. कोई घर में बैठ के किताबें खोल खोल के तो वो वाली बैटिंग तो नहीं की उसने, जाहिर सी बात है. उसने जाके खेला है और तब जाके वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बना है. लेकिन आई थिंक हैविंग कैप्टनशिप कैप एज वेल is taking him down. जैसे कि we do have good examples of that. सचिन तेंदुलकर के साथ ये हुआ था. सचिन तेंदुलकर was started underperforming when he became a captain. उसको बहुत इशू हो गया था. कोहली is a good example of that. So I think that's where the main issue lie in the captainship. कि अगर आप कैप्टनसी किसी और को देते हैं ना, बाबर will shine. और अगर बाबर शाइन करता है, आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है, it will glow like stars all around. One quick thing I'll say is just to give Pakistan team the benefit of the doubt is that यार हम इंडिया से तो यूजुअली हारे जा रहे हैं वर्ल्ड कप में इन ओडीआई स्पेशली एंड ऑस्ट्रेलिया टू आई मीन वी डोंट डू गुड अगेंस्ट दीस टू टीम्स सो होपिंग better results to follow but again with these two teams I was expecting a loss anyway so hopefully आगे चल के अच्छे होंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा और इससे इंडिया में खेलने से और अगेंस्ट these top two sides so hopefully
that I think I will come. I think New Zealand would be a tough competitor this time Yeah. around. Yep. क्योंकि आज we'll get into that. लेकिन New Zealand would be a tough competitor. South Africa का, I think they are playing the role of Pakistan in this World Cup. कि वो छोटी टीम से भी हार रहे हैं, बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा रहे हैं, like you know it's completely, which we will talk next. लेकिन ये है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये तीनों बड़ी टीमें हैं और पाकिस्तान का चांस है इनसे जीतने का. आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी मेंटल प्रेशर. well, प्रेशर तो होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होता है. और अभी थोड़ी देर में अफगानिस्तान के साथ गेम शुरू होगा इन लाइक नेक्स्ट 3 आवर्स. तो अब ये भी एक पता नहीं, पहले तो कभी हम लोग इस चीज के बारे में वरी नहीं करते थे लेकिन अब करनी पड़ रही है. But any case, if you guys are okay, we can move on to our next topic. Yeah. Right? Okay, Yep. so the next topic is South Africa versus England. What a game it was. Crazy, crazy, crazy game. I mean, South Africa scored 399 runs on with only 7 wickets down, right? Or what's the name of that batsman? Klaasen? He scored 109 and 67, like 60 ball century or something. I mean, that is something that you need on your batting side to get up to 400 score mark. What a beautiful batting inning it was. And then their bowling was crazy good as well. They contained England like nothing else. And I believe they wrapped them up on what, 170 in only 22 hours? 22 overs, like not even till the half of the inning. The inning se pehle unko sara wrap up kar diya. It's a beautiful game, beautiful. So guys, let's go in order. Ahsen, what do you say? Yeah, that was an amazing game. And in fact, the captain, South African captain, wasn't playing that game. Right, And right. the person who scored those runs, the name you just took, he's the guy who was, I believe, he was playing as his replacement, and he shined there. I mean, like anything. And मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह की टीम से सो चलें, इस तरह की इनिंग से भी शुड बी इंस्पायर्ड. और कोई अगर हमारी तरफ से भी ऐसी इनिंग खेल जाए एक क्या दो बात गेम है, में, तो क्या क्या बात है. और बात है. फिर उस तरह क्या बन जाए, कोई बन जाएगा, नॉर्म बन जाए कि यार ये खेलनी है ऐसी इनिंग. तो जैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इफ्तिखार के इफ्तिखार, exactly. I was about to say that. Can do it. Yeah. या Right, right. और जिसने की पावर है उसमें, छोटी फील्ड्स में, मतलब छोटे ग्राउंड्स में. एंड ही अगेंस्ट पेस ही सो गुड. लाइक स्टार्क को जिस तरह के उसने राइट पे छक्के मारे लेग साइड पे, आई वाज शॉक कि जिस तरह उठा के बस ही वाज जस्ट पिकिंग इट. तो सामने सामने से उठा रहा था वो. हाँ, और लेग पे मारना है इतने फास्ट बॉलर को, इट्स लाइक वेरी हार्ड. Yeah. सो दैट व्हाट आई से कि गुड पॉइंट्स हैं, जो चीज हम सीख सकते हैं उस गेम से. एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाज अमेजिंग इन देयर बॉलिंग एज वेल, इन देयर बैटिंग. न्यूजीलैंड जो है, सॉरी इंग्लैंड वाज देयर, राइट. इंग्लैंड का यही था कि या बैटिंग नहीं चली, बॉलिंग में भी दे स्ट्रगल and couldn't able to do something over there. But yeah, overall game was interesting to see कि इतनी big, इतना दो teams जो कि इतनी बड़ी teams हैं, they are playing so good. और वो मैं चाहता कि हो सकता है कि game close हो, like they were about to do 350 or something, 350, 360 or maybe 380, something close to see. But वो नहीं हो सका. That was shocking. Umair? Yeah. From my perspective, मेरा perspective ये था कि now that Tampa Bambu was out of the picture, right, जो उनका कैप्टन है, तो मुझे डर लग रहा था कि उसको stabilize कौन करेगा, because he has a lot of experience, right? Right, जब right. Quinton de Kock out हो गया, like I think 5 run पे out हो गया, it was Reza Hendricks. He scored maybe around 80 odd runs, I think, to stabilize, right? So he played that anchor role. फिर आपका आया Van Dusen, and I think he played pretty well. उसने भी 60 बनाए. But I think the Right. most important part was not even Klaasen. सबसे important तो वो था Marco Jansen, जिसने अब 75 runs बनाए off of like 39 balls or 40 something balls, and he hit a bunch of sixes, right? So he was like Yeah, the 6 sixes, yeah. हाँ, तो I think उसी ने he took the game out of reach. आपका 330 से लेकर वो 390 400 तक उसने 399. yeah, he took it there, That's right? true, that's true. He scored और 75 runs, yeah. बिल्कुल. So I think that he was the crucial aspect that once again Pakistan is missing. Bowling side पे, as you can see,
even Ben Stokes office actually, and Root and all these guys, no one is really clicking right now. Sub teens mein out ho gaye. Your number one scorer was Mark Wood. Can you imagine? कि आपका bowler सबसे ज़्यादा 43, yeah, that was insane. I score didn't see that. Oh Yeah, my. yeah, yeah. Margot was the highest scorer. Yeah, so that was a shock for me कि ये हो कैसे सकता है कि आपका bowler ही सबसे ज़्यादा. Everyone got out in the teens. So I think Correct. I would like to throw that out the window because this is not typical England. England usually, is really good. And if you remember from the last podcast, they're in my top four, right? It's Pakistan and Yeah. England, they might be not making it out No, of no, this. no, no. I really hope that England stays this way. Yeah. It's an aberration. I think unka bas, just a bad day for them. They should recover. Gotcha. Talal? Yeah, no, it's same thing. I mean, just I agree with you guys. There's South Africa. I feel like South Africa is playing this ODI World Cup. It's like T50 as opposed to T20 because their intent is aggressive. They're relentless. They just want to go for big shots, and especially Klassen, the flicks he was hitting on the leg side, those sixes were just unreal. I mean, it's like a literally video game like stuff. So यार I mean expectation यही होती है कि कोई पाकिस्तान का कर सके जैसे एहसन और उमर ने कहा कि यार we expect that from Iftikhar that he can deliver something like that, maybe to some degree Rizwan too. Lekin unfortunately we don't have that aggressiveness, but we're hoping that we can get something like that too. But South Africa just playing like on another world. They're kind of like Pakistan too, like Yasser you said, they lost to Netherlands but they just went out and crushed England. So yeah, I mean they are looking very dominant, and I'm expecting a big contest against Pakistan too on Friday when we play That's them. true. That's true. Because Pakistan used to be considered as the most unexpected team. You never Unexpected, yeah. know, it's so unpredictable and this and that. We are pretty predictable this time around with our bowling. Everyone know what to do with Haris Rauf and Shaheen. अगर शाहीन को पहले 2 ओवर में उसके विकेट नहीं मिली, शाहीन will lose it और वो इधर उधर आपको बॉल देता रहेगा. आपने सिर्फ बैट टच करना है and it will go to the boundary itself. Yeah, ऐसा लग रहा है and literally radio control bowling हो रही है. yeah, Sorry, Talal, exactly. what were you saying? And no, I was just gonna say when they played in Mumbai, Wankhede Stadium, right? And it's really run machine pitch. I guess you just wanna just score at like 300, 400. So, but shockingly, I was a little actually shocked with England how they played. But yeah, I think they are pretty much I think done, if not already. So I hope so. I hope so. I yeah, hope so they don't perform because, um, see, these are the teams, England and Australia. yeah, Australia managed to get into top four, but England, if it stays low, it would help Pakistan eventually because हम लोग तो दोबारा उसी स्टेज पे हैं, दुआ दुरूद की स्टेज पे yeah. कि अल्लाह करे ये हो जाए और अल्लाह करे वो हो जाए, and then For we'll the be able will to of get God, somewhere. yeah. Uh, But but I just wish England doesn't ruin our party. If Pakistan's last game is against England, and I think that could be a decider who gets the fourth slot. So because the way this is going now, I think it's India, New Zealand, South Africa, and then maybe Pakistan, Australia for the fourth. But true, could be a true. decider. England And hopefully stays doesn't win our down. party. Yeah, yeah, Yeah. I totally yeah, agree. I mean, just imagine, and I agree with all of you. I mean, it was such a fascinating batting inning that South Africa played. Those sixes, those shots, the way the composure of players. I mean, they were taking the inning along, and when they got a chance, they started hitting. They did not get scared at any moment. They just went off, and they had to. So fantastic performance. All total credit to their batsmen for sure. And then their bowling and fielding side when they literally restricted England on only 170. Just imagine उनके 8वें नंबर पे आके बंदा मार रहा है सेंचुरी क्लासन, ठीक है. yeah. Just imagine कि अगर हमारी तरफ से कोई उस नंबर पे कोई आके सेंचुरी मार के जाए against a defending champion, a World Cup defending champion. अगर उसके खिलाफ आगे कोई इस तरह सेंचुरी मार के जाए छठे सातवें आठवें नंबर पे, I mean, do we have that kind of batsman in our lineup? I don't know. Hassan Ali. Hassan Ali, Yeah, he I can do it. mean, he could do Osama it, Mir but it's just maybe. it's a big
I think I'll just say with you guys on this subject for Osama Mir. I mean, I don't know maybe what your take is, but I mean I don't know what you guys think. But from my end, I think Osama Mir is kind of the experience is not looking good so far because he's leaking runs, not picking up wickets. I mean, although he's young, he's a lot to prove and learn. That But was his first game, Talal. That was his first game. It was the debut game yeah, for him. लेकिन यार उसको एशिया कप में भी चांस मिला था शायद एक गेम में. I don't know, it didn't perform good. I don't know. I Again, could be wrong. Maybe. again, ये सारे ये आई ब्लेम इट टू द मैनेजमेंट. ये सारी प्लानिंग आपकी कम से कम 2 साल पहले रैप अप हो चुकी होती है. Backup को उनको खिलाना चाहिए था. Like आपको these guys should have played to test them out to see what are they made of. You know, what's their एग्जैक्टली pedigree in performing in big games, especially at the World Cup एग्जैक्टली level. You know? Exactly. And Talal, you weren't here. I don't know if you heard our podcast or not, the last one. But that was something that I kept crying about. कि यार हमारी मैनेजमेंट को सारे ये जो नए इमर्जिंग प्लेयर्स से इनका डेब्यू करा देना चाहिए था. कम से कम भी 6-8 महीने पहले इन सबके डेब्यू करा के कोई छोटी छोटी Agreed. Yeah. सीरीज करा के बीसी टीम बना के भेज के इन सबके डेब्यू करा देते, ताकि Yeah. जब वर्ल्ड कप शुरू होता हो तो किसी के पास ये एक्सक्यूज नहीं होता कि यार उनके पास Experience एक्सपीरियंस player. को I mean, डेब्यू नहीं. like India and Australia does, right? I mean, India ने भी Right, अपने youngsters को खिलाया अभी जब उनकी series हुई West Indies में. Tilak Verma and those boys were playing, you know. So right, India right. tested them out good. And अगर कोई injury होती है, God forbid something, you know, especially at the big stage, you know, Exactly, then they can exactly. just pull these guys in from their 15-man squad, or you know, Totally they're agree. ready. Their pillars just Yeah, ready, and you can just plug yeah, those in. So आपको वो glaring hole नजर ना आए अपनी lineup के अंदर के यार, what exactly. are we gonna do if I you know. cannot blame Osama Mir for that Yeah. because उस बेचारे को उन्होंने Agreed. I mean, उठा it's के, not his fault. It's just the yeah, management kept him. they Yeah. they grabbed him and they threw him in like 20 feet pool कि जा भाई स्विम करके निकल के आ खुद ही बाहर, और वो भी Exactly. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. आई मीन Yeah. सो ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं और पाकिस्तान की मैनेजमेंट के इश्यूज हैज बीन, दिस crap has been going on for a while. I don't see it getting resolved anytime sooner. Literally इसीलिए जब लोग कहते हैं ना कि यार आपका तो हर साल हर दफा ये इशू होता है कि आप दुआ दुरूद पे आ जाते हो और आप लकी हो कि आगे इट इज वेरी ट्रू बिकॉज हम लोग, हमारे पास जो प्लेयर्स आते भी हैं वो अपने नेचुरल टैलेंट के ऊपर आते हैं. हमारे यहाँ कोई ग्रूमिंग नहीं होती, हमारे यहाँ Right. कुछ नहीं. हमारे जो कोच होते हैं वो भी रिमोट जॉब कर रहे हैं कहीं और बैठ के. आई मीन Work from home. या वर्क फ्रॉम होम एग्जैक्टली. उससे भी दो दो लैपटॉप पकड़े हुए हैं और दो जगह से जॉबे कर करके पैसे कमा रहे हैं एंड दैट्स इट. सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट टू द टीम. वो बेचारे जो भी खेल रहे हैं ना वो लिटरली अपनी शेयर नेचुरल टैलेंट के ऊपर खेल रहे हैं. So, but yeah, this game was fantastic. You guys have any other comments? We can move to our third point. Yeah, I No, think We we good. can. good? All right. Good. So the third one, oh, the big one so far, New Zealand and India. It was a beautiful. I watched the first inning, when India bowled, and the way they bowled beautifully. I mean, उन्होंने न्यूजीलैंड के बैट्समैन को हिलने ही नहीं दिया. जो स्कोर आराम से 325 तक भी जा सकता था, 330 तक जा सकता था, they restricted it around 270. और एंड में जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, आई मीन इट वाज अमेजिंग. इंडिया की जो बॉलिंग है एशिया कप के बाद से, इट हैज गॉटन बेटर. एशिया कप के टाइम से ही gotten better tenfolds. I think they found their missing links and everything just clicked right at the right time for them, and they've been unbeaten ever since. So let's start with that, Ahsen. यार bowling पे मैं बात करूंगा. The thing that I noticed and I want to know from you guys के क्या सोचते हैं आप लोग कि जो नई बॉल होती थी ना पहले, वो बहुत लीथल होती थी. लाइक अगर साइन आ रहा है बॉलिंग कराने, इफ यू आर फास्ट बॉलर एंड यू कैन डू गुड यॉर्कर्स, आपकी बॉल स्विंग होती है, तो न्यू बॉल से लोग करते थे और वो लोगों से नहीं खेली जाती. और जब जैसे बहुत पुराना होता रहता था वो रिवर्स होता था, बट इट्स प्लेएबल, मोर प्लेएबल. बट मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट हो गया है इस दफा की न्यू बॉल पे. बॉलिंग नहीं हो रही फास्ट बॉलर से, और जब पुरानी हो रही है ना बॉल, देन एवर एबल टू स्विंग इट और रिवर्स इट. पहली बात तो ये, व्हाट इंडिया इज डूइंग बेटर नाउ के वो बहुत जल्दी
फिगर आउट कर रहे हैं कि बॉल अगर नहीं हो रहा स्विंग, तो दे चेंज द स्ट्रेटजी। एंड अगर आपने देखा लास्ट मैच में जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था कि रोहित शर्मा ने कुछ ओवर के बाद ही सिराज को शायद इशारा किया, या फिर ही साइन टू बुमराह, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ही सेड कि नहीं हो रहा, तो देन दे टॉक अबाउट इट एंड व्हाट दे चेंज। अगर आपको बहुत स्विंग करनी होती है तो आप तो बॉल के इधर इस साइड पे यानी कि राइट पे या लेफ्ट पे उसको ड्रॉप कराते हैं, बट दे स्टार्टेड ड्रॉपिंग इट ऑन द लेदर साइड। सो तो उससे बॉल थोड़ी सीम होने लगी, तो बॉल थोड़ा नीचे आने लगा, डिप करने लगा और विकेट के अगेंस्ट आने लगा। सो आई मीन माय पॉइंट इज के डूइंग इट सो गुड के दे आर लुकिंग एट द व्हाट्स गोइंग ऑन अ पिच एंड चेंजिंग द सिचुएशंस, दैट्स व्हाट दे चेंज ऑन देयर बॉलिंग। वो सिर्फ कहीं फास्ट ऐसा तो बॉल, नहीं है कि होम ग्राउंड्स हैं? ये भी एक एडवांटेज है फॉर श्योर, ऑब्वियसली दे प्ले They know, home yeah, grounds they है, know वो their वहाँ पे grounds very cricket well. है, and they know the situation, they know how it works, so ये तो Hmm. एडवांटेज है, और नो डाउट कि इंडिया टॉप पे है, तो और ऑब्वियसली बट या इस एडवांटेज के साथ दूसरी चीज ये कि Yeah. दे आर एबल टू बॉल गुड, तो उस पर कोई डाउट नहीं। Amazing bowlers. जो जिस बॉल के ऊपर उसने जो पहली विकेट गिरी है ना न्यूजीलैंड की, सॉरी जो सिराज आया है, शामी, मोहम्मद शामी, उसने अपनी जो पहली बॉल डाली है वो लग के जो कट हुई है अंदर और उसके ऊपर उसने विकेट ली है। मैन, आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है आपकी स्विंग नहीं हो रही है, लेकिन आप उसको इस तरह तो आप उसको कटर तो दे सकते हो ना, इन कटर तो दे सकते हो। वही कटर ब्यूटीफुली करना, डन। या हाँ, तो वो चीज जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स आई डोंट थिंक सो दे कैन डू। वो बस खींच खींच के मार सकते हैं और वो आगे से बैट्समैन जो है वो बैट आगे रखेगा और बॉल जाएगी। थोड़ा सा है इशू, आई मीन उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आई थिंक शुरू में जो रन चले जाते हैं ना वो या अरे बैट्समैन के लिए बहुत प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो मे बी देयर वाज वन मोर थिंग दैट आई वाज थिंकिंग कि या व्हाट इफ अगर पाकिस्तान जो है वो ओपन कराए एक तरफ से स्पिनर से, या they can try that. But anyways, I don't want to द take न्यू up your time, Umair. You can get started. I'm sorry, SM, were you saying something? नो नो, आई एम गुड, आई एम सेइंग कि न्यू बॉल से भी किसी स्पिनर से ट्राई करा सकते हैं, लेट्स सी Right, के कैसे चलती है। right, और right, मुझे right. एक बात ये करनी थी कि पाकिस्तान डिफेंस, बॉलर्स डिफेंस, के सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग नहीं चल रही, बहुत सी टीम्स की बॉल नहीं, फास्ट बॉलिंग नहीं चल नहीं रही, चल रही, नहीं चल Good रही। point. Yeah. तो Yeah. सिर्फ इंडिया की कुछ चल रही है, मे बी देयर होम ग्राउंड्स, दे नो व्हाट टू डू, बट बाकी सब जो है ना वो बस दंगल कर सर रहे हैं। जैम्पा जैसे को हमने विकेट्स दी हैं, वो खैर आई एग्री टू दैट कि वो हमारी वीकनेस है, हमारे बैट्समैन की वीकनेस है कि जहां स्पिनर्स आते हैं हमारे वाले, और Yeah. well that's a scare against Afghanistan too, Oh but my Yeah. we'll God. get to it, we'll get to it. Umair? Yeah. Now, so मेरी तरफ से I think the for me the find of the tournament has been Ravin versus name Rachin Ravindra, right? That guy's playing out of his mind. कितने 21-22 साल का है वो, Beautiful, और beautiful. him along with Daryl Mitchell kept this innings together. Oh, अगर आप they उन did. दोनों की innings निकाल दो कुछ भी नहीं है उनकी. I think the last 5-6 got out for like probably like Oh, 10 they just went out. Yeah. run till out of it. So they held that innings together. So I thought that could have been enough because they have a deadly bowling attack, right? Ferguson or yeah, Trent Bolt, वगैरह. But the Yeah. way Virat has been playing is it's been, this is what, you know, you can tell this is when heroes are made, you know, and this is Exactly. how like Virat is Very taking well that. said. Very, So, very well said. and despite that, let's just say मुझे इतना डर लगता है कि अगर विराट भी आउट हो जाए, फिर आपके पास श्रेयस आयर है, he doesn't get out, then KL Rahul है, फिर सूर्य, like it's just a deadly lineup. It goes till आप मतलब अगर आप उनको कह रहे हो ना कि आप चेस करें, तो फिर आप भूल जाएं, वो आप अगर 500 रन भी बनाएंगे वो चेस कर लेंगे। yeah, वो उनका मसला ही नहीं है चेस करना। They have a very long lineup of talented batsmen. correct. और So I haven't seen any collapse in a while. When was the last time they collapse कब हुआ था? Maybe that rain game against Pakistan. Yeah, पाकिस्तान वाला गेम जो था, But yes. even then they got to 266. ये नहीं कि कोई collapse हुआ. Yes. It's not like they got हाँ, out. लेकिन उसके अंदर भी लोग उसको बड़े मजे से भूल जाते हैं और मीडिया उसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं होने देता है कि एशिया कप के अंदर हमने पाकिस्तान को धूल चटाई थी एंड दिस एंड दैट, लेकिन उस इनिंग को सब भूल जाते हैं। कहते हैं हाँ पाकिस्तानी बैटिंग कोलैप्स कर जाती,
बात वही हो जाती, बात वही होती कि हो जाता, कर जाते, फ्यूचर टेंस के अंदर, दैट डजंट मैटर। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोहली और रोहित शर्मा दोनों को शाहीन ने आउट किया था, एंड आई थिंक उसने और भी विकेट्स ली थी, और पाकिस्तान ने उनको सही तरह उनको कंटेन किया था उसके ऊपर। सो दैट वाज वन क्रेडिट जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम को अच्छी तरह मिलता है, क्योंकि हमेशा वो सारी चीज जो है वो मैस्क हो जाती है उनकी लेटर परफॉर्मेंस से। एंड नॉट टू फॉरगेट, वो 2 दिन का वनडे इंटरनेशनल गेम था, और उसको भी बिला वजह नए नए रूल्स बना बना के उसको स्ट्रेच किया था। सो बिल्कुल, बट but But again, I do not want to yeah, talk politics about it, but it was crazy. like, so the fact that Rohit or Virat for the first time ever were bowled out in a match, right? Which Shaheen did. Kabhi aise pehle nahi hua. That just goes to show you that how strong that team, batting lineup is. Or against Pakistan, Kohli was out on 16 as well. Oh yeah, और कोई भी बात नहीं कर रहा उसके बारे में, इसलिए everyone is highlighting, oh Rohit Sharma, but yeah, they're not talking about what Virat, that he got out at like what, 16, yeah, yeah. right? So but hey, we cannot take away the credit from him. He's an amazing batsman, and he having a dream run right now. Bilkul, bilkul. Like, if this one is his last World Cup, man, he is going to leave a mark for a very long time. And he's Yeah, only 1 century away to level the record of Sachin Tendulkar, of yeah. Yeah, 49 ODI 49 centuries. ODI centuries. Yeah. bilkul, bilkul. Yeah, I mean, Uh, I have nothing else to say. That amazing batting lineup. They're heavy Beautiful, favorites for this World Cup. beautiful. Yeah. Talal, Yeah, no, I mean, I think the New Zealand India game was a good game. I was expecting a close matchup, but unfortunately, India made it too easy again, and they're sitting on the top for these reasons. They're just a damn good team, and I mean, all the way around, bowling, fielding, batting, and Kohli is, king, chase, King Kohli, chase master, whatever you call him. He's true. that good. He's the goat. Just like in US sports, you call it the goat for MJ or LeBron or whoever. King Kohli, I mean, Oh, he is you, right up there. oh, okay. Okay. I think he's the Okay. goat in cricket. Yeah, he is that good. You just no shade. I mean, even if he gets out on, maybe 20 or 15 or 16 runs, it doesn't matter. It's Kohli. Yeah, he got out. That's okay. He had a bad game, but he's gonna, come on in the next one. And for last 2 games, he had a century in the last one. This one, 95 or 96, whatever he got today. So again, I think in Dharamshala, the pitch actually there was no bounce, there was no seam. The ball was moving a little bit, but again, if you look, there was no bounce in the pitch. So New Zealand's batters were struggling in the start of the game, but the ball got older, and then Daryl Mitchell took some advantage, and he had some big Um, shots. They took it Mitchell to played very beautifully. Yeah. yeah, and then, but like Yasser, you said at the start of this, right? I mean, they could have got more, maybe 30, 40 runs more, plus Oh, yeah. 300 would have been a challenge for India. But again, with King Kohli, I would not bet against him. So No, no. right. You're so right. You're so right. It wouldn't be a challenge. And also जब पाकिस्तान के against भी उसका ये score था, so I'm not taking away the credit from Kohli कि यार वो कोई बेकार player है बिल्कुल इसलिए बिल्कुल yeah. 16 पे out हो गया था. I was trying to give credit to our bowlers, which are बेचारे जिनको जो पूरा वक्त जलील हो रहे हैं सबके हाथों कि भाई उन्होंने आखिर कोहली की विकेट ले ली थी जल्दी. So there was a हाँ little बिल्कुल credit to बिल्कुल our bowlers. हाँ Yeah, You know, exactly. they managed to pull that off. Yeah. But yeah, beautiful game. And I mean, I was hoping कि न्यूजीलैंड को खेलना चाहिए, मतलब न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने एक और चीज प्रूव की जो तुम कह रहे थे ना एहसन, कि पाकिस्तान का प्रेशर रहता है कि हमेशा इंडिया से हारता है, ऑस्ट्रेलिया से हारता है, तो इंडिया हमेशा न्यूजीलैंड से हारता था. एंड they just And they broke that curse today, beating Yeah. them they in group demolished stage. that curse this time Yeah. around. So And it wasn't even close, right? I mean, आपको लगे यार कि कहीं तो मैच बन रहा है कि New Zealand in the game. But India again, they lost what lost some early wickets, not early, but I think 71 पे गिरी थी पहली wicket उनकी ऐसे कुछ. लेकिन again, when with Virat and like you said, Umair, their batting is so deep. Yeah, there is no glaring hole. I mean, कोई भी yep. आके किसी भी you know half a mm, century or grind it out. And when Kohli is there, it's just an easy task for them.
All right, guys. Gotta rush up a little over here because I do not want it to be a very long video. So let's just briefly talk about Pakistan, Afghanistan, which is going to start in like next 3 hours. So Ahsen, why don't you go ahead and get started? Yeah. Pretty quick. I believe it's gonna be a tough game. But Afghanistan is not an easy target. I would say our team. And against Pakistan, वो हमेशा full power में आते हैं. So Pakistan needs to go with the whole, energy and try to win it. Like सही है वर्ल्ड कप में रहने के लिए चाहिए बट अगेन एक्स्ट्रा थोड़ा सा जाके आपको एफर्ट करना पड़ेगा तो So what do you इंशाल्लाह say? Pakistan जीतेगा या Afghanistan जीतेगा? यार जीतेगा इंशाल्लाह बट क्लोज गेम होगा seems like Okay. Umair. Remember, we were wrong last time too. हमने जो बोला था कि Australia को हराएगा. So, don't my want to biggest jinx it. I know, I don't want to say. My biggest fear is कि नसीम नहीं खेल रहा. जो बहुत अच्छा खेलता है अफगानियों के against, he's our Yeah. champion against ये That's बात a Afghanistan. तो good सही point. So He helped us win against 2 matches against them, right? yeah. Last time. Last game. So I just have a feeling that I don't know, like Rashid and Mujib have not been like that daunting against other teams. Like in हमारे सामने, like we just go into a shell against them for some reason. So we just have That's to play fair. attacking. I'm expecting even if we scored, agar hum 280, if we're batting first, score 280 plus, that should be we should be able to win this match. And chasing wise, same thing. We have to restrict him to 280 or less. But I'm pretty confident. Gotcha. Talal? Yeah, man. I mean, just yeah, Pakistan, Afghanistan. It's like a rivalry game. Seems like it's Pakistan, India. But again, Pakistan को match देता हूँ उसमें just because Afghanistan can mess up in their batting. Their bowling is good. Obviously, it's in Chennai. Spinning track मिलेगा. और अगर पाकिस्तान पहले खेलता है, I'm expecting them 280 plus. Anything below 250, Afghanistan will chase it down with the Gurbaz is playing in good form. So yeah, it's going to be a daunting task again for Pakistan with those, Mujib and Rashid, the spinning track in Chennai. It's going to be tough, but again, inshallah, I think Pakistan can sneak out this win. Do you imagine Right. any changes for this Pakistan side right now? I think so. I think they're going with the I, same team. Same team? I think so too. Yeah, I don't think it's gonna. Cause it's Chennai, right? So it's favor spin. So I think they're gonna would like to keep Usama Mir as well. Maybe They they bring should. in Shadab They for should. Nawaz because they need some batting. Nawaz Yeah. struggled, but But otherwise, I think Shadab struggled as well. So that's true. I That's true. mean, Yeah, but again, they yeah. might just And it replace was, him. I mean, just again, brings it back to the same point कि management का issue है कि आपकी ये situation हो गई कि आपको अपना vice captain बिठाना पड़ गया because of his performance. Unfortunately, yeah. I mean, So, just look at the level of mismanagement going on in the yeah, Pakistan camp. But in any case, they hit rock bottom for that. I mean, just have they to sit out definitely your did vice hit rock captain. bottom. I mean, अपना मजाक बना दिया उन्होंने इस दफा. This Yeah, time yeah, around, most sixes conceded by the bowling team. सबसे yeah. ज्यादा fast bowlers पिटे हैं पाकिस्तान के. सबसे ज्यादा छक्के पाकिस्तान के bowlers को पड़े हैं. सबसे ज्यादा छक्के एक बंदे को जो है वो हारिस रऊफ को पड़े हैं. So I mean, it has been horrible so far. But any case, Pakistan, Afghanistan, yes, I think Afghanistan के पास batsmen अच्छे हैं. जैसे तुमने कहा तलाल गुरबाज, he is lethal. और अभी एशिया कप से पहले जो सीरीज हुई थी उसमें अफगानिस्तान ने ठीक ठाक स्कोर किया था. Yes. ठीक ठाक स्कोर किया था श्रीलंका में. I mean, they beat England of all people, right? I mean, England. I know England is struggling this World Cup, but again, beating Right. England is not an easy task, and they did Not it. an So easy task, not an easy task. और फिर उसके बाद राशिद जैसा स्पिनर, बाबर को हमेशा आउट करने वाला राशिद है. तो yeah, अगर राशिद खेल रहा है, उसके बाद दूसरे आई थिंक मुजीब दूसरा स्पिनर है, Mhm. राइट. सो इनके स्पिन डिपार्टमेंट भी काफी स्ट्रांग है. अगर उन्होंने हमारे मिडिल ऑर्डर की वैसी कहाँ पे टांग रही होती हैं आते ही, तो दे आर गोइंग टू रिप थ्रू अस लाइक नथिंग एल्स. बट लेकिन अल्लाह रहम करे. आई वुड से कि 50-50 चांस है. आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के पास कोई क्लियर कट yeah. चांस है इसमें. आई थिंक कि जहां जरा सी बॉल टर्न होना शुरू होगी, रिजवान भाई वही अपनी जंपिंग जैक वाले शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे और वो उसी तरह आउट होंगे तो बोल्ड होंगे एलबीडब्ल्यू. इफ्तिखार जो है, आई थिंक ही विल प्रॉब्ली गोना
hit couple boundaries and whatnot and just, probably Gonna get out. 30 or at the most 40 runs Yeah. बना के वो निकल जाएंगे. Pakistan अगर पहले बैटिंग करता है, I don't think so they'll score more than 230, 240, and Afghanistan will easily chase it. And I अगर think पाकिस्तान, it's a do or die game for both teams. I think, but हाँ, definitely और अगर Pakistan is a do or पाकिस्तान, die. एग्जैक्टली, और अगर पाकिस्तान चेस करता है, अगर अफगानिस्तान ने 300 के पास स्कोर कर लिया, 280, 270, 280, 290, They're not chasing. पाकिस्तान That's इज नॉट gonna गोइंग टू be a चेस. daunting challenge. सो अभी भी मैं खुले दिल से परसेंटेज दे रहा हूँ पाकिस्तान को कि 50-50 है, वरना आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग चलो इन ऑल ऑनेस्टी. गूगल से पूछते हैं. पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान. Yeah. Yeah. So based on the past experiences, अगर आप पुराने फिगर्स तो सब उठा के देखेंगे तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है, पाकिस्तान ने हमेशा हराया है. बट आज न्यूजीलैंड का 20 साल पुराना, 20 साल से चला आ रहा है अगेंस्ट इंडिया, कि हमेशा वो जीतते आए, आज वो टूट गया. इट्स जस्ट दैट कि इस वर्ल्ड कप में सबकी फॉर्म कैसी है, इस वर्ल्ड कप में ट्रैक कैसे हैं, इस वर्ल्ड कप के अंदर टीमें किस तरह आ रही हैं, और इस वर्ल्ड कप के अंदर एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं ना वो किस तरह के हैं, दे आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अफगानिस्तान, खैर प्रोबेबिलिटी जो आ रही है 70-30 आ रही है, पाकिस्तान 70 और 30 अफगानिस्तान. I'm sure. बट Yeah. सेकंड थिंग इज दैट के अफगानी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने आईपीएल बहुत खेला है, सो दे आर वेरी यूज्ड टू ऑफ दीस विकेट्स. थर्ड, इंडियन क्राउड एंड इंडियन सपोर्टर सपोर्ट्स. Exactly. They do. They That's a do. good point. Yeah. So it's gonna be IPL a की, very yeah. the same similar game जैसे पाकिस्तान इंडिया का हुआ था, तो क्राउड में ऐसा ही होगा. और ये I'm pretty इंडिया sure. की, मतलब इंडिया की बी टीम लगती है. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मतलब मैं कोई हाँ मजाक नहीं हाँ उड़ा रहा, मतलब या लेकिन द या वे दे प्ले देयर गेम, द वे दे हैव लर्न टू प्ले, वो बिल्कुल इंडिया को फॉलो करते हैं, इंडिया की टीम की तरह खेलते हैं, which is a very good thing because very they are good thing. following champions. तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इवन दो स्टैट्स माइट नॉट एग्री विद दिस, लेकिन मैं इसको 50-50 गेम कहूंगा, क्योंकि दे हैव अ पोटेंशियल. उन्होंने अभी अभी इंग्लैंड को मारा है यार. दे कैन डेफिनेटली टर्न द गेम अराउंड, एंड इट्स So नॉट दैट Yeah. फार फेच्ड. very important game. Very एक एक important चीज game. मेरे, Yeah. राइट, एक चीज मेरे दिमाग में बस आ रही थी कि इस वर्ल्ड कप में ये हाल हो गया है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान अब बैक बेंचर्स के साथ जाके बैठ रहा है, कि अब हमारे राइवल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया नहीं है, बल्कि अब हमारे राइवल्स जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, प्रॉब्ली Okay, अब for भूटान, यूएसए, yeah, कनाडा, केनिया, जिम्बाब्वे, you name it. युगांडा, नामीबिया, ये सब Yeah. होंगे. Yeah. So yeah, it's going to take some time, some drastic changes on Pakistan side to make a comeback in international cricket, like proper तरीके से. So with that said, I think we are approaching around 40 minutes mark already. So let's wrap it up. Some last minute comments. Ahsen, I'll start with you. या मैं ये कह रहा था कि ये मैच जितना पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप में रहने के लिए, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारी पॉडकास्ट के लिए, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में पाकिस्तान के बारे में बात कर सकें. तो हमारी पॉडकास्ट को चलाने के लिए पाकिस्तान प्लीज विन, ताकि हम की टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान ये हारता है तो वो रेवेनेंट, यू नो, आई डोंट नो वी कैन टॉक अबाउट इट एनीमोर नहीं के नहीं, क्या. मेरे पास बॉब रॉस का चैप्टर है पूरा. हम बॉब रॉस की पेंटिंग के बारे में बात करेंगे, कि वो अपनी सेंसुअल आवाज के अंदर जो पेंटिंग्स बनाता था. वो तो ठीक है, मैं वो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की छोड़ दो टीम ना के फिर. बारे अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर कौन बात करेगा पाकिस्तान के बारे में? में. वही तो मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इम्पोर्टेंट है. तो आई एम प्रेइंग कि पाकिस्तान जीत जाए इंशाल्लाह, ताकि इंशाल्लाह, हमारा वो इंशाल्लाह, हाई मोटिवेशन, वो हमारा जो इंशाल्लाह. कनेक्शन है वर्ल्ड कप के साथ, बीइंग पाकिस्तानी, वो कनेक्ट होना रहे. या एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन में यही फर्क होता है. हम्म समझ रहे हो? Absolutely. एक्सपेक्टेशन तो यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन प्रिडिक्शन क्या है बेस्ड ऑन करंट सिनेरियो, वी या ऑल नो दैट. चलो उमेर, देखते हैं इंशाल्लाह. Yeah. For me, I would just say, keep an eye out on Abdullah Shafiq and Saud Shakib, because they play spin very well, right? So अभी इंशाल्लाह, आपके जो trio इंशाल्लाह. है, Nabi, Rashid और Mujib, they will be our, you could say, our savior in this match. So keep an eye out on that. Hopefully, we might इंशाल्लाह, win. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. तलाल.
Yeah, I would agree with Umair. Abdullah Shafiq, he plays good against Spain. Key factor today, and definitely Babar Azam. Sorry, the match tomorrow, but definitely Babar Azam. He is the captain. He gotta deliver on the big stage, World Cup, do or die game for Pakistan. He's gotta come and shine. He gotta go for the century or 50 at least, but century would be blessing Century. on this one. Yeah, Very well said. definitely. Very, very well said. All three Gotta of deliver. you. I thank you so much. Thank you for your time. I know ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन thank you so much. आप लोगों के साथ बात करके बहुत मजा आया और इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में भी हम लोग सब साथ जुड़ेंगे. And viewers, thank you so very much to join us and watching our podcast. और please feel free अगर आपके पास कोई suggestions हो, कोई feedbacks हो, तो comment section use कीजिए और प्यार और मोहब्बत के साथ हमें फीडबैक दीजिए. हमें कोई गिला नहीं होगा आपसे, बल्कि हम इंशाल्लाह आपकी फीडबैक पे काम करेंगे. और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. हम चारों के लिए बहुत इंकरेजिंग होगा और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आएंगे. अभी क्रिकेट का सीज़न है, तो ज़्यादातर हमारा कंटेंट क्रिकेट के अराउंड होगा. इंशाल्लाह क्रिकेट के सीज़न के बाद फिर हमारे पास दूसरे भी टॉपिक्स हैं. हमारे पास दूसरे गेस्ट स्पीकर्स भी हैं जो कि हमें ज्वाइन करेंगे. सो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ many different topics. तो इंशाल्लाह साथ रहिएगा, आगे बहुत अच्छा होने वाला है. एंड थैंक यू सो मच. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. टेक केयर एवरीवन. Allah Hafiz.